श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। पकौड़ों की चटनी आज की हमारी वीडियो है, आप कर लें। आज की हमारी वीडियो है यूनिकॉर्न, इंडियन यूनिकॉर्न से रिलेटेड के ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, इंडियन यूनिकॉर्न ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स। ये मैंने खुद से टाइटल बना दिया है अजीब कुछ भी। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सही वाला, व्हाई इंडियाज टेक यूनिकॉर्न्स आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड। ये होता है आधा अधूरा पढ़ना। Why India Bangalore feels young and youthful and eager to experiment. Bangalore is actually called the Silicon Valley of India. About 42% of India's startups are born here every year. It has become this thriving magnet for talent. India's startup scene is booming. This year alone, the country has seen over 3 dozen unicorns, private companies valued over $1 billion. And much of this impressive growth has happened in record time. Last decade and a half, it's a sea change. We live in such a different world today. I think in 2006, if you said we would have 10 unicorns, let alone close to touching maybe 100 unicorns, that would have looked madness. From last September to this September, there is on an average 3 unicorns every month. So it's a clear indication of ecosystem maturing. India has had a record year of IPOs. But with a recent stock launch faltering and fierce global competition, can Indian startups keep up this breakneck growth? Unlike in the old days when we had to build everything from scratch, today a lot of the infrastructure for creating a company exists. The challenges will be how to succeed in the business before somebody else does better. So speed and execution is becoming even more vital. startup. So India's technology story goes back at least 5 or 6 decades, when the government decided it needed a strategic location to start a whole lot of defense related technology companies that would serve governments, armed forces. Since then, Bangalore became the location for a lot of those companies, and to support them, a lot of educational institutions have come up in and around Bangalore. The government chose Bangalore as the place to build its defence industry, as the southern Indian city was considered a safe distance from its rival countries Pakistan and China. In the early 80s, smaller private companies also began to shift their operations to the city, among them Infosys. In 1981, with initial capital of $250, 7 engineers set up the business, marking the beginning of the private tech industry in India. Today, it's one of the biggest companies in the world, with a market capitalization of over $95 billion. Infosys, in some sense, is India's original startup. When Infosys began in 1981, it was in a socialistic era when India was not really that friendly towards business, and we had many challenges. For example, just getting a telephone connection would take 2 years. To import even a single computer, you had to go to Delhi to get a license. And even if you had to make a small change in the configuration of the computer that you purchased, you had to go back and get the license changed all over again. Then came economic liberalization in the 1990s. The government deregulated markets and reduced taxes and import tariffs. Infosys and other IT companies thrived. In 1993, Infosys went public and built India's first software campus in Bangalore. Prompted by this technology boom in the 1990s, people from all over India poured into Bangalore to work or study. So Bangalore was the takeoff point for a lot of those people that came to study and then went overseas to study further to get postgraduate degrees or work in a lot of these global companies, perhaps most of them in the United States. And they made a comfortable life for themselves overseas and never returned. But something changed in the late 1990s and 2000s
Bangalore became a valid destination to chase a career in technology on its own. Many local talents, especially those from humble roots, decided to stay. Lots of overseas Indians returned to Bangalore as well. कमाल. Vani Kola was one of them. She built and sold 2 startups in Silicon Valley before starting a venture capital firm in Bangalore in 2006. I was in India end of 2005 for a long trip, which I hadn't done in the 2 decades that I was gone. And for me, it was just a very different country to the one I left. There was so much confidence, so much potential, so much opportunity. I saw a big future for Startup India. What I saw was the underserved consumer experience. India consumer story, just ready to embrace many new business models and entrepreneurship that could successfully build very high scale companies. But the startup culture itself, I could trace back to about 2007 when Flipkart was born. So Flipkart is one of India's 2 large online retailers. 2 engineers who used to work for Amazon decided that why don't we start an online retailer like Amazon by ourselves. So the 2 of them got together in a little apartment not far from where I'm standing in Koramangala in Bangalore, and they decided to start Flipkart. Like Amazon, Flipkart started out selling just books and slowly expanded into other areas, including fashion, by acquiring e-commerce startup Myntra in 2014. Kola was an early investor in Myntra. Flipkart acquiring Myntra was a really smart move. Flipkart had already dominated many categories except fashion at that time, and Myntra was the fashion leader. So it made sense that combined they would have a only real horizontal platform that truly came out of India. And today, Flipkart is one of the biggest startups in India. The company was bought by Walmart for $16 billion in 2018, making the 2 founders billionaires. The story of Indian e-commerce started out as definitely not something that we see today. I don't think anybody expected what really happened in the last 7-8 years. It's been a tremendous journey. There used to be a time when a startup in entrepreneurs in India was shunned. Entrepreneurs or people who worked in startups told me that in India's arranged marriage system, parents were not willing to have their daughters married to startup entrepreneurs or workers in startups. That whole thing has changed because of people like Sachin Bansal, Vinny Bansal, the 2 entrepreneurs who set up Flipkart and sold it. All of those stories have now made being a startup entrepreneur or working in a startup a very valid career option for a lot of young Indians. The turning point for a lot of the technology startups, and particularly the internet startups in India, has been the arrival of Reliance's Jio Telecom service. 4 or 5 years ago, when Reliance launched the service, India had very expensive broadband internet. Mukesh Ambani, one of the world's richest men, decided that he wanted to offer calling for free and data broadband internet services at dirt cheap prices. Smartphones were becoming cheaper. A lot of Chinese brands were introducing really sleek, inexpensive devices. So multiple types of internet startups started getting launched in India, and particularly in Bangalore, startup ecosystem started catching fire. A part of that early ecosystem was online education firm Byju's. Today, it's become India's most valuable startup with 7 million paying users. Unlike the first generation of Indian tech companies who solve problems for global companies, the current generation of startups like Byju's are trying to solve local issues. Initial years, when we were offline, scaling that model was a big challenge. We started this to solve 3 big challenges which exist in our education system. One challenge around access to good teachers, learning driven by fear of exams, unfortunately, and not love for learning. And more importantly, it's impossible to personalize the way you deliver classes when there are 30, 35, 40 students sitting in a classroom.
Now, to solve these challenges at scale, it's very important to use technology as an enabler. At the right time, when smartphones were taking off, apps were taking off, we were able to launch our first learning app. That's in 2015 August. And with time, with more people coming online, with data becoming better and cheaper, we've been able to scale our model around. So using smartphones as a medium to reach out. 2021 has been a breakout year for these startups. During the COVID-19 pandemic, many consumers have turned to online services for grocery deliveries, tutoring, and medical diagnoses, contributing to surging revenues. Billions of dollars have poured into India. In July, for instance, as in China, the Communist Party has cracked down on a lot of these technology companies. Indian startups gathered almost $8 billion in venture and PE capital, making India for the very first time overtake China as a venture capital destination. Record numbers of unicorns have been born at an unprecedented speed, and investors are hoping to profit from companies that could become the next Google or Facebook. Global investors always asked, where is the exit? And in startup lingo, that means, how do I make a return on my investment? Suddenly, a lot of these startups have plans to debut in the public markets. And now that is a legit exit. And investors then triple, 4 times, 10 times their investments. That is what's happened this year with the public market debut of a food delivery startup called Zomato, which was really the game changer. I think thrice in our journey, we've gotten to a point that we can't do this anymore, right? And this just cannot be done. But we actually continue for one more day, and it all gets over and it all starts again. Zomato as a company is neither profitable, and its medium-term prospects for profitability are really mediocre. But retail investors have lapped up the shares of Zomato, sending the valuation of the company soaring to $13 billion on debut. But digital payment firm Paytm's IPO in November, which is India's biggest ever, has been a disappointment. It raised $2.5 billion, but the stock price has sunk dramatically, making it one of the worst initial showings by a major tech firm since the dot-com bubble era of the late 1990s. Like Zomato, Paytm is not profitable, and its IPO debacle casts a shadow over other Indian startups. The Indian startup world has to show that they are not only building growth, but also profitability. When you look at the founders of the first generation of companies in India, like Infosys or Wipro and so on, they were, as I said, they had to be financially very prudent. They had to generate profits from their business and feed that back into the business, because that was the only source of capital that we could reinvest. Today's entrepreneurs are encouraged by their backers to grow quickly, even if they don't have to make a profit. The thesis is that once you grow and reach a certain critical size in the market segment of your choice, then you can always make your company profitable. Profitability is still ways off for a lot of the startups. Of course, there is a 1.3 billion market that on the face of it seems like a humongous market, but then there is the other side to it, that is not enough people with spending power. It all depends on how many consumers can afford to buy, how much of a middle class India can grow each year, and who can afford to buy these services. India's 40,000 startups also face other challenges to grow bigger. Compared with China or the US, India's internet industry is still much smaller in size, and the bureaucracy faced by India's first generation of private companies still exists in some ways today, pushing some startups out of the country. Sometimes I hear frustration echo through entrepreneurs' voices when they talk about things that are needed to, say, apply for an IPO or get a permission to set up an entity, how complicated the rules are. Corporate taxes are very high compared to countries like Singapore, and a lot of the entrepreneurs have then chosen to shift their bases to countries like Singapore because they find that the tax regime in Singapore or elsewhere is much friendlier. While it is easy enough to start a company in India, as you scale, I think you run into
lot of areas where regulation is not clear. One thing would be industry by industry for government and government bodies to continue to work to be a step ahead in terms of providing clear regulatory guidelines and continuing to engage industry in modifying that. But starting up in India still has advantages. Half of the Indian population is under the age of 25. Young Indians adapt to technology easily and could be potential consumers with spending power in the long term. They also provide the country with a rich talent pool. India has about 4.5 million software engineers, and within the next 10 years this is going to double. So as the technology talent improves in the country, it will provide a fertile ground to create more startups. It's still a nascent ecosystem, just about at takeoff point, but a lot of entrepreneurs are actually dreaming big. Entrepreneurship is, it's not a skill, it's a mindset. It's a mindset where you don't take no for an answer. If you are passionate about what you are doing, and if that is making an impact, like I'm sure that we can do this for decades. जी जनाब, अगर आपसे सवाल किया जाए कि बेसिक रीज़न क्या है इंडिया में इतने स्टार्टअप होने का, शुरू होने का। अच्छा, मैं पता है मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पूरी वीडियो में यही सोच रही थी कि इनको एग्जैक्टली पता है कि इनको एजुकेशन के बाद करना क्या, क्वालिफाइड होने के बाद इनको क्या पढ़ना है, कौन सा कोर्स करना है और उसके बाद इन्हें आगे क्या करना है, इनको इनके स्टेप बाय स्टेप पता है कि इनको कैसे चलना है। इतना शऊर, इतनी अकल है। ये पहली चीज़ है, ये जेन्युइन चीज़ है, ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है जो लाजमी हो। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं इस तरफ। यूनिकॉर्न, मेरे हिसाब से तो मैंने सुना कि पाकिस्तान में कोई यूनिकॉर्न हो, यूनिकॉर्न कंपनी हो जो ऐड हो, होम ग्राउंड यहाँ का नहीं है ना। तो हमने एक वीडियो में देखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है, किसको टेक्नोलॉजी में जाना है, किसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसको अपना स्टार्टअप करना है, किसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यानी कि हमारी जो अंदर की स्किल्स है ना, वो हम खुद नहीं जान पाते और ना हमें पता चल पाती है कई सालों तक। मैं कभी कभार अक्सर सोचता हूँ कि मैट्रिक के बाद एक गैप आता है। मैं कभी कभी अकेले में होता तो सोच लेता हूँ कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए, एक ऐसा कोर्स होना चाहिए, एक ऐसा 6 महीने का। आप मैट्रिक के बाद मेरे ख्याल में साल बचता है ना फर्स्ट ईयर में जाने का, 6 महीने होते हैं रिजल्ट आने में। अगस्त में तो एडमिशन हो जाते हैं। नहीं, मैट्रिक की डिग्री आते आते मेरे ख्याल में बच्चे के पास 6 महीने या साल एक्स्ट्रा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है नहीं मिलता कॉलेज जाने के लिए कुछ मंथ मिल जाते हैं जिसका गैप होता है, पूरा साल। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो जो मंथ है ना, वो मंथ में एक ऐसा पैकेज हो जिसमें उस बच्चे की काउंसलिंग हो। मैट्रिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो थोड़ा बहुत समझ चुका है चीज़ों को, बाशऊर हो चुका है। अब उसको ज़िंदगी का एक और दौर जो है गुजारना है, उसमें उसने अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं सेट करना है। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक ऐसा इदारा हो या ऐसा कोई सिस्टम हो कि लोगों मतलब वहाँ पे बच्चे को तैयार किया जाए, पहले उसको समझा जाए उस बच्चे की अपनी नेचर क्या है, उसकी अपने थिंकिंग क्या है, उसका अपना फ्यूचर माइंड क्या है, फिर उसे बताया जाए कि तुमने ये करना है, ये डिग्री लेनी है, ये पढ़ें, ताकि फिर वो माशरे का एक कामयाब इंसान बने। 25-25, 30-30 साल तक हमारे यहाँ किसी लड़के को या किसी लड़की को ये नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या है, मुझे करना क्या चाहिए और दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैंने जनरली ये चीज़ देखी है लोगों में भी और ख़ुद भी फील करी है कि मैट्रिक के बाद मुझे मैं अपना बताती हूँ आपको। मैट्रिक के बाद जब मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन सी फैकल्टी में एडमिशन लेना है। मीन्स मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था प्री इंजीनियरिंग में जाना है, प्री मेडिकल में जाना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें क्या कोर्स आउटलाइन होगा, उसमें क्या होगा, मुझे इवन ये भी नहीं पता था। और आपको पता है कि मेरा बहुत रुझान था कंप्यूटर में, मुझे कंप्यूटर की स्टडी का बहुत शौक था। मतलब मैट्रिक जो मैंने किया तो हमारी 2 फैकल्टीज़ हुआ करती थी, बायो एंड कंप्यूटर, तो मैंने कंप्यूटर साइंस से ही मैट्रिक किया है। मुझे कंप्यूटर में इतना रुझान था, मेरी इतनी स्किल्स थी कंप्यूटर को लेकर,
आप यकीन करें मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आगे क्या लेना है, कि कंप्यूटर में कैसे पढ़ पाऊंगी। कंप्यूटर में अब जैसे आईआईटी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग आईआईटी जाते हैं, आईआईटी मद्रास हो गया, डिफरेंट जगह पे है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको गाइड कर सकें, ऐसे कोई भी इदारे नहीं है जो आपकी काउंसलिंग करें, आपको बताएं, एक बच्चे के अंदर खुद जज करके बताएं कि इसके अंदर ये टैलेंट है और इसके लिए इसको फला जगह जाना है, और वहाँ पे इसकी मतलब एक अच्छी तरीके से ये मंझेगा, ये एक हीरा बनेगा। ये चीज़ है ही नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे आईआईटी में हमने देखा कि उनके 100 कुछ बिलियनियर वो बिलियन वो है एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारे 2 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आईआईटी टेक्नोलॉजी का रुझान ही नहीं है, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि उसको क्या करना। अच्छा, मुझे अब अफसोस होता है, मुझे पर्सनली अफसोस होता है कि मैं कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर में क्यों नहीं कोर्सेज करे, मैंने क्यों नहीं आगे बढ़ा। फिर मुझे ख्याल आता है कि हमारे तो प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम इंजीनियरिंग ले लो। अरे तो मुझे तो रुझान तो मेरा कंप्यूटर में था ना, तो मैंने इंजीनियरिंग करके क्या किया। अच्छा, मैं खुद अपना एहतिसाब कर रही हूँ, मैं खुद से ही पूछती हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना अकेले में, तो वैसे मैं भी अकेले में पूछती हूँ कि मैंने क्या किया। मुझे तो कंप्यूटर लेना था, मुझे तो कंप्यूटर की मतलब चाहिए थी, कोर्सेज करने थे। मेन मुद्दा ये कि गाइडलाइन नहीं, और अच्छा माँ बाप की तरफ से गाइडलाइन नहीं है, टीचर्स की तरफ से नहीं है, तो मैं कहूँगा कि उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। अच्छा, टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं है। आप टीचर से आप यकीन करें कि केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप घुमा फिरा के सवाल कर लें, टीचर आपकी शक्ल देख रही होती है। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल कर लें। जैसे एक दफ़ा एक्टिव और पैसिव के बारे में मैंने एक टीचर से सवाल कर लिया कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस होंगी तो उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होगा। वो घबरा गए। अच्छा, फिर मैंने खुद ही जाके मतलब सर्चिंग करी अपनी मदद आपके तहत, मैंने उसको जाके समझा, एक्टिव पैसिव को समझा कि क्या होता है, कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। वो वर्ड की फॉर्म नहीं बता पाए मुझे। आप यकीन करेंगे, मैं कॉलेज की बात बता रही हूँ आपको। बिल्कुल, कि जब टीचर्स को या टीचर्स ने भी नहीं समझा हो कहीं से, या माँ बाप जो हैं उन्हें भी चीज़ों का नहीं पता हो गया हमें बच्चों को, तो फिर उस वजह से ना हमारी आने वाली नस्ल आती है वो ज़ाया हो रही है, हमारी आने वाली नस्ल बड़ी होती है ज़ाया भी नहीं हो रही। बल्कि मैं तो एक समझूंगा कि अगर लोग कारामद नहीं है, लोग वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो एक तरह से मुल्क के ऊपर बोझ हैं। अगर कोई शख्स कुछ नहीं करता तो एक तरह से वो मुल्क की आबादी में, मुल्क के अनाज में, मुल्क के एसिड को ज़ाया कर रहा है। अच्छा, इंडिया में उल्टा है, समझो इंडिया में ये हुआ है कि लोगों को समझ आ गई हमने करना क्या है। अच्छा देखिए कितना हमसे बाद में वो आईटी की फील्ड में आए थे, यानी आईटी जो है पाकिस्तान में पहले आया। देखिए, एक तो इंडिया बहुत आगे आज, लेकिन अफसोस इस बात का मज़ीद होता है कि पाकिस्तान में आईटी पहले आया था, इंडिया हमारे 10-15 साल बाद इंडिया में आईटी वाला रूल आया था। मतलब आईटी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें इंडिया में बाद में आई, मोबाइल इंडिया में बाद में आया। तो उनको आईटी पे आए हुए कितने साल हुए? 15 साल हुए, 15-20 साल हुए। तो मैं कह रहा हूँ इतनी तेज़ी से तरक्की, 15 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, इतनी तेज़ी से तरक्की की, और हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखिए, स्टार्टअप का मैं आपको एक और फ़ायदा बताऊँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये है, एक जॉब है, एक ऑफिस वर्किंग की एक जॉब है, जिसमें कोई आपको चाहिए कोई बंदा डेटा एंट्री के लिए फॉर सपोज, ठीक है। अब वो जॉब निकली, एक कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल सी मतलब बहुत आम सी कंपनी है, जहाँ पे गारमेंट्स की कंपनी रख ली, ठीक है, गारमेंट्स की कंपनी है। एक जॉब के लिए आप यकीन करेंगे 150 बंदे अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, और आप सोच रहे होते हो मेरा तो भाई कुछ बन ही नहीं सकता यार 150 में, मुझे कहाँ से MBA, BBA, ग्रेजुएट, इसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियाँ उन्होंने ली हुई हैं, और वो लाइन में लगे हैं, और बिल्कुल जानवर वाली उनकी हालत है कि वो सुबह से लाइन में लगे हैं और शाम के 5-6 बज रहे हैं और अभी भी उनका नंबर नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर डिग्रियों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। जिनके अंदर जो स्किल है, या आईटी से रिलेटेड, या कोई भी ग्राफिक्स वगैरह कोई भी स्किल है, तो वही लोग कमा पा रहे हैं जो 25-25, 30-30 साल तक डिग्रियां जमा करते करते ये सोच के लाखों रुपए डिग्रियों पे लगा दिए, ये सोच के कि कल को हमें जॉब मिलेगी। अच्छा, एक हमारा सबसे बड़ा गंदा माइंडसेट जो हमारी कौम का, ख़ास तौर पे इंडिया में तो बहुत फ़र्क आ चुका है, पाकिस्तान में जॉब का रुझान, यानी क्या करना है, एक अच्छी जॉब करनी है, क्या करना है, एक अच्छी जॉब करनी है। अच्छा, अक्सर मैंने जिक्र किया है लोगों से, दोस्तों यारों से उठते बैठते हैं तो अक्सर जिक्र होता है, आप इंडिया के हवाले से जिक्र होता है कि यार इंडिया में इतना फ़र्क है, लोगों के अपने स्टार्टअप्स हैं, बेंगलोर के बारे में जिक्र होता है, आईटी हब के बारे में जिक्र होता है, पाकिस्तान में जिक्र होता है, पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में डिग्रियां लेके जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो अक्सर जिक्र होता है। तो अक्सर मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत पहले अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी इंडिया पाकिस्तान में, तो उसमें एक कंपनी होती थी, कंपनी का मतलब होता था अंग्रेज़,
यानी जब इंडिया पाकिस्तान जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे ना, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लोग बोलते थे कंपनी। अच्छा, कंपनी में एशिया के जो लोगों को जॉब मिलती थी, जो जिस बंदे को इंडियन हो, पाकिस्तान, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होता था ना, तो वो उसकी सरकारी जॉब थी। अच्छा, जब पूरा हिंदुस्तान था कोई भी हो जाए, तो आज तक वो कंपनी वाला जो सरकारी नौकरी वाला जो क्रेज़ है, हमारी दादा दादी, उनके वालिदैन से ये चलता आ रहा है। तो आज तक सरकारी नौकरी, वो आपने एक फिल्म देखी थी नायक अनिल कपूर की, जिसमें वो कहती है कि मेरा अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, कोई टीका लगाने वाला, तो कोई सरकारी चपड़ासी, तो कुछ भी मिल जाएगा, वो मुझे ब्याह देंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है कि मेरी बेटी का शौहर सरकारी मुलाजिम हो। तो मुलाजमत का या जॉब का रुझान उस वक्त से लोगों के जहन में छप गया है। अपना बिजनेस करना, अपना कारोबार करना लोगों के जहन में नहीं है। अच्छा, आपको पता है अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी इदारा है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके बाहर अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा है ना, तो उसके एटीट्यूड ना पूछा, मतलब वो ये नहीं देख रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किस पोस्ट पे हूँ, मतलब मैं प्यून हूँ वहाँ पे, और उसके ऐसे ठाट बाट है, वो ऐसे नखरे दिखा रहा है लोगों को कि क्या बताऊँ, कि कहीं का बहुत मतलब कितनी डिग्री का ऑफिसर लगा हो वो कहीं का। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा अकल से काम लो, आपके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो, ठीक है, तो आप 4 लोगों को तो खुद रोजगार दे सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, धक्के खा रहे हो, 4 गालियाँ सुन रहे हो, मतलब आप यकीन करें उनके एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि बस अब वो आपको पता नहीं क्या कह देंगे, पता नहीं, आप अपनी इज्जत बचा के निकल रहे होते हो। मैंने पता नहीं पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि अक्सर लोग एंटरप्रेन्योर या मोटिवेशनल स्पीकर या आईटी इंटरनेट से रिलेटेड या स्किल बेस्ड फाइवर के हवाले से सिखाना, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, काम सिखाने के हवाले से लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, तो वो अक्सर हाथ जोड़ के कहते हैं खुदा के लिए कुछ कर लो। अच्छा, कमेंट आते हैं लोगों के, कमेंट आते हैं मैं ये नहीं करना, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करते नहीं हैं, हमारी कौम करती नहीं है। तो किसी वीडियो में मुझे एक चीज़ पता चली थी, वीडियो लंबी हो जाएगी, बात करूँगा तो किसी वीडियो में मुझे ये पता चला था कि पाकिस्तानी कौम काम क्यों नहीं करती, इसकी किसी ने कोई लॉजिक बताई थी, वो किसी वीडियो में बताऊँगा मैं। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।